Neuro-linguistic programming brain through language. डीप अंडरस्टैंडिंग आती है अपने मुतालिक, अपनी ज़ात के मुतालिक और दूसरों के मुतालिक. This is one of the first things in my courses. ये जो चीज़ I have used one of your techniques in my sales and it closed. अब लगता है कि जो मेरा एक स्किल लेवल है शायद मुझे वो पहले महसूस नहीं हो रहा था. क्योंकि I feel like I need it. Because I can. Look, I am way better than I thought I would be, you know. If you're getting training in Pakistan, I want to recommend that you train with Kamran. Kamran Sultan. He is fantastic and I highly recommend him. Highly recommend. If you want to learn NLP, learn from the best in Pakistan, learn from Kamran. I transformed as a human being, as a mother. मेरी पेरेंटिंग बहुत इम्प्रूव हुई विद माई डॉटर्स, माई रिलेशनशिप इम्प्रूव्ड. इसके अलावा मेरे हस्बैंड के साथ मेरे रिलेशनशिप्स बहुत इम्प्रूव हुए. आफ्टर दिस ट्रेनिंग आई कैन सी कि द मीनिंग ऑफ माय लाइफ हैज जस्ट चेंज्ड. यहाँ से अपनी लाइफ को पीछे की तरफ देखता हूँ, 5 साल पीछे की, और आज जब मैं अपने आप को देख रहा हूँ तो एक डिफरेंट इंसान की सूरत में अपने आप को देख रहा होता हूँ. NLP में जो बिलीफ सिस्टम है, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको presuppositions या convenient beliefs हम कहते हैं. There are a number of them. I'll not go into all of those. I'll just give you a brief, overview of some of those. तो सबसे पहला इसका जो presupposition है, और वो ये है that perception is not reality. We are all perceptual map makers. हमारे ब्रेन को, अकॉर्डिंग टू साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, हमारे ब्रेन को एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम तकरीबन 2 मिलियन बिट्स इंफॉर्मेशन जा रही होती है. Just think about this. Right now, as you are listening to this or watching this, there's so much information in addition to this that's going in your brain right now. There are things in your surrounding. There's temperature in your surrounding. There's the feeling of your clothes on your body, the rise and fall of your chest. With every breath you are inhaling, and then with your exhaling carbon dioxide. If you had your lunch or dinner or breakfast, whatever, there is this digestion process going on in you right now. The blood is rushing in your body, your nails are growing, your hair are growing, your beard is growing if you're a man. So there are so many processes. और इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये आपके ब्रेन में जा रही है, कॉन्स्टेंटली जा रही है. दिस इज इन एडिशन टू वो जो 5 सेंसेस से सारी इंफॉर्मेशन आ रही है. देयर इज सो मच गोइंग ऑन इनसाइड अस. ओके, सो अगर हम ये सारी 2 मिलियन बिट्स इंफॉर्मेशन को एक साथ प्रोसेस करने लगे, विल गो क्रेजी. दिस इज लाइक अभी आप अपने मोबाइल पे अगर बहुत सारे आपने एप्स खोले हुए, आपका मोबाइल स्लो होने लगता है, मोबाइल हैंग करने लगता है, देन यू हैव टू इट्स लाइक क्लोज ऑल ऑफ दोस, और अगर कंप्यूटर पे हो तो यू हैव टू रीस्टार्ट द होल थिंग. इसी तरह हमारे ब्रेन में अगर हम ये सारी इंफॉर्मेशन, इट्स लाइक एक मैं दिल धड़का रहा हूँ, उसके बाद मैं सांस भी ले रहा हूँ, 1 मिनट जरा खून गर्दिश कर लूं, अरे इस वाले हाथ में खून गर्दिश करना रह गया था, ये पैर भी तो था. ओके, इफ वी स्टार्ट डूइंग दिस ऑल कॉन्शियसली, विल गो क्रेजी. सो अल्लाह ताला की शान है कि उसने हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे शऊर में हमारे नहीं है, मगर वो लाशऊरी तौर पे हमारे साथ हो रही हैं. ओके, सो इससे हमारी शख्सियत के 2 पहलू बन गए. एंड दिस इज अगेन टू मेक थिंग्स अंडरस्टैंडेबल, वी आर यूजिंग दीज टर्म्स. सो यू हैव अ कॉन्शियस माइंड and you have an unconscious mind, and there are things you do in your consciousness that you are aware of, and things that you're aware of, we call them that's your conscious, and things that you're doing which are not awareness, we call them your unconscious. Okay, so हमारी जो ये इंफॉर्मेशन आ रही है हमारे सेंसेस से, हमारे अनकॉन्शियस में 3 प्रोसेसेस कॉन्स्टेंटली हो रहे होते हैं. हम आने वाली इंफॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट करते हैं. So for example, some people are still trying to join this session, and when they join, and if let's suppose if they ask any one of you कि अभी तक क्या हुआ है, every one of you will tell 100% truth from your perspective, yet
It will not be the same as someone else. Because हर एक आप में से जो कुछ अभी तक मैंने आपको बताया उसको अपने अपने अंदाज में डिस्टॉर्ट करेगा. So हम आने वाली इंफॉर्मेशन को कॉन्स्टेंटली डिस्टॉर्ट कर रहे होते हैं. आने वाली इंफॉर्मेशन में से हम चीजों को डिलीट कर रहे होते हैं और उनमें से हम चीजों को जनरलाइज कर रहे होते हैं. So 3 प्रोसेसेस कॉन्स्टेंटली हमारे जहन में अनकॉन्शियस लेवल पे हो रहे हैं: डिस्टॉर्शन, डिलीशन एंड जनरलाइजेशन. We are not consciously deciding, okay, मैं इस चीज को डिस्टॉर्ट करूंगा और इस चीज को डिलीट करूंगा, इस चीज को जनरलाइज करूंगा. These are the processes that are happening in our brain automatically. We are constantly distorting, deleting and generalizing information, जिसके रिजल्ट में हमारी perceptions form हो रही हैं, हमारी thought structures form हो रहे हैं. और जो thoughts हमारी form हो रही है, यानी हमारी mental screen पे हमारे thoughts बन रही हैं, हम उन thoughts को, it's like I often say this, the most difficult thing for a person is to disagree with their own thoughts, because it's in us and we think what I'm thinking is the way it is. This is how the world appears to us. So हमारा जो behavior होता है, it is not based on, and this is the second presupposition of NLP, it is not based on हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है, but it is based on what we think is happening. I'll repeat that. हमारे साथ क्या हो रहा है जिंदगी में, it doesn't matter. What really matters is what we think is happening. Okay, and this is the reason you find 2 people in exact same situation respond entirely differently. Because one person is distorting, deleting, generalizing in one way, and another person is distorting, deleting, generalizing in another way, and responding in a totally different way, forming a different set of perceptions, and with a different set of perception, responding and reacting in a totally different way. Does this make sense? Have you noticed this? Sometimes I saw like, there is something happening in your life and you are like, yeah, happy with this, and maybe a brother or a sister or a friend, they are looking at it totally differently and have a totally different perspective on that. और होता फिर क्या है, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने जैसे, it's like the most difficult thing for a person is to disagree with their own thoughts. And since, and when people don't agree with my thinking, okay, the way that I think, my perceptual world, when people don't agree with this, it feels like, people are not with me. They don't understand me. Okay. But how many of you can relate to what I'm saying? Type 1, so it will help me. So presuppositions जो हमारी बन रही हैं, सबसे पहली presupposition क्या हो गई? That we are all map makers. Perception is not reality. However, हमारा जितना भी behavior होता है जिंदगी में, it is based on our perceptions. So इसमें एक चीज जो पता चलती है वो ये कि at any given point, what we really truly experience is not the event. The way life appears to us is, हमें ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में कुछ हालात हो रहे हैं, वाकयात हो रहे हैं, इनकी वजह से हमारे अंदर whatever feelings we are getting, irrespective of वो feelings positive है या negative है. Okay, so जी आजकल मुल्क के हालात ठीक नहीं है, दुनिया के हालात ठीक नहीं, इस वजह से मुझे एंजाइटी हो रही है. लेकिन लोगों को बेहतरीन हालात में भी एंजाइटी होती है. अगर हालात ही एंजाइटी के जिम्मेदार होते तो फिर सबको होनी चाहिए थी. It's like मेरे साथ ऐसा हुआ था. अच्छा, फिर हमारे साथ क्या होता है कि हमारे पास we have memories, we have thoughts. Memories क्या होती है? Those are our thoughts. Okay, so हमारे past में कोई चीज हुई थी, किसी ने मेरे बचपन में मेरे साथ कुछ हुआ था, and now that event is over. It's done. I have grown up. I have grown out of that situation. That thing is the thing of the past. It has nothing to do whatsoever. Even people in that event don't exist in my life anymore. Now, if I am bothered by that
It is nothing but just a figment of my own imagination, a program running in my head, a thought pattern I'm running in my brain, and experiencing whatever, whether it's positive or negative, that's besides the point. NLP is process-based, content-free. इस पे थोड़ा सा मैं बाद में बात करूंगा. So हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे जहनों में आ रही है, डिस्टॉर्ट, डिलीट, जनरलाइज होकर हमारी परसेप्चुअल वर्ल्ड फॉर्म हो रही है, और वो जो परसेप्चुअल वर्ल्ड है वो हमारी बेसिकली हमारी इंटरप्रिटेशंस हैं जिंदगी के बारे में, हालात के बारे में, वाकयात के बारे में, इवेंट्स के बारे में, सिचुएशंस के बारे में, लोगों के रवैयों के बारे में. और जो चीज हमें असल में बॉदर कर रही होती है, जो चीज हमें असल में परेशान कर रही होती है या हमें खुश कर रही होती है, वो चीज कोई एक्सटर्नल इवेंट नहीं होता, वो कोई बाहर से होने वाली चीज नहीं होती. वो खुशी जिसे हम बाहर तलाश कर रहे होते हैं वो हमारे अपने अंदर होती है असल में. It doesn't appear that way. The way it appears is जब मुझे वो बोनस मिलेगा ना, फिर मैं बड़ा खुश हूँगा. जब मैं अपना वो गोल अचीव कर लूंगा तब मैं खुश हूँगा. सो हम डिले करते हैं खुश होने को, हम डिले करते हैं शुक्र करने को, हम डिले करते हैं अच्छा फील करने को, इंतजार में किसी एक्सटर्नल इवेंट के, जबकि वो इवेंट हमारी उस खुशी का या उस गम का जिम्मेदार नहीं होता. सिमिलरली हम एंजाइटी फील करते हैं, हम फियर फील करते हैं, हम स्ट्रेस फील करते हैं by thinking about unpleasant thoughts, by holding unpleasant thoughts in our own brains. हम जिस किस्म का गुमान अपने जहन में कायम करते हैं किसी चीज के बारे में, वो गुमान हमारे ऊपर गालिब होने लगेगा कि जी गालिब गुमान ये है. सो एनएलपी की एक प्रीसपोजिशन जो है, मैंने 2 डिस्कस किए अभी तक. Now I'm coming to the third one. Third presupposition NLP की जो है वो ये है कि हमारी जो language है, it's the literal representation of what we do in our own heads. यानी हम जो गुफ्तगू कर रहे होते हैं, हमारी जो बातचीत होती है, इससे हमारे जहन में होने वाले जो प्रोसेसेस हैं इसकी इंडिकेशन होते हैं. ओके, सो मिसाल के तौर पे अगर फर्ज करें एक शख्स कहता है कि जी मुल्क के हालात जो हैं वो बड़े तकलीफ देह हैं. Okay, so taklif de jo lafz hai, this is a kinesthetic word. So this means the person is processing the situation at the level of his or her feelings. Another person says, yes, like मैं देख रहा हूँ मुल्क के हालात जो हैं वो ठीक नहीं. Okay, मुल्क के हालात ठीक नजर नहीं आ रहे. So they're like looking up and like talking about ठीक नजर नहीं आ रहे. So this person is visualizing the situation in his head. Another person say, मैं तो कहता हूँ जी अब हालात ठीक नहीं है. आप किसी से भी बात करें आपको अंदाजा होगा हालात जो है वो. So the person is processing at the level of words, auditory. Okay, मैं कहता हूँ, किसी से भी बात करें. Okay, so even though these 3 people may be talking about exactly the same thing, but they are processing information in 3 different ways, using 3 different brain languages. Okay, इस पे हम थोड़ी देर में बात करते हैं. So language is a literal representation of what people do in their heads. So by paying attention to people's language, we can find out what they're doing in their brains. And by paying attention to our language, we can find out what we are doing in our brains. And by changing the language that we are using, we can change the programs we are running. Okay, because neuro-linguistic programming, a lot of times हमारे साथ ऐसा होता है कि आपने सुना होगा बहुत बार लोग कहते हैं it's like ये फलानी चीज होने, मुझे तो पहले ही पता था ये ऐसा होगा. Okay, how many of you have heard this kind of things from people or even have said this? Okay, like मुझे पहले ही पता था ये चीज खराब हो जाएगी and then फिर वो खराब हो जाती है. How many of you have heard this or said this? So I see a number of people saying this many times. Now think about this. When people say this, कि मुझे पहले ही पता था ऐसा होगा, अगर आपको पहले ही पता था
तो आपने उसके लिए कुछ किया क्यों नहीं? Because there's this human desire to prove themselves right, even if it hurts them. Okay, so a lot of times when people are saying these kind of things, मुझे पहले ही पता था ऐसा होगा. Okay. In their heads, they are seeing something bad happening, and they're not doing anything about it. They have convinced themselves. Okay, it's like the first करो कि आप रोड पे जा रहे हैं और आपको पता है कि आगे जाके गड्ढा है और उस गड्ढे में अगर आप जाते रहे तो आपकी गाड़ी उस गड्ढे में फंस जाएगी. Don't you think it is wiser to stop and take a turn or find a different way rather than just keep going in that direction? But a lot of times people live their lives कि उन्हें पता था मुझे कि मैं आगे जाके मैं ये बिजनेस डील कर रहा हूं ना, ये रिलेशनशिप में एस्टैब्लिश है, मुझे पहले ही पता था इसमें कोई ना कोई मसला है. जब आपको पता था मसला है तो फिर आपने ये बिजनेस क्यों किया? अगर आपको पहले ही पता था ये मसला है तो फिर आपने ये रिलेशनशिप क्यों एस्टैब्लिश किया? Why didn't you stop? पहले ही पता था ये होने वाला है. So there was this, ये पता कैसे था? There was this gut feeling, but the person did not trust his or her own feelings. Okay, so हमारा जो unconscious mind है, it's guiding us, it's telling us, it's informing us, but we try to ignore it. Okay, so there is this wisdom in every one of us. अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में जो भेजा, सो हम में से हर एक के अंदर, मैं ये बात बहुत सिंपल मुझे बहुत लगती है समझने में कि यानी जब अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो हम उनको स्कूल भेजने के लिए सारी तैयारी कराते हैं. हम उसे बैग देते हैं, किताबें देते हैं, कॉपियां देते हैं, पेन देते हैं, पेंसिल देते हैं, स्केल देते हैं, शार्पनर देते हैं, हम उसको सही जूते देते हैं, यूनिफॉर्म देते हैं, हम उसको लंच बॉक्स देते हैं, पानी की बोतल देते हैं, हम वी मेक श्योर उसके पास कुछ पैसे भी हो. चंद घंटे के लिए हमारा बच्चा हमसे दूर हो रहा है. We want to make sure that he has everything he or she needs. चंद घंटे के लिए. So वो जो हमसे हमारी माओ से कई गुना ज्यादा मोहब्बत करता है, उसने जब हमें इस दुनिया में भेजा तो ऐसे ही भेज दिया होगा. हम बड़े मोहब्बत करने वाले हैं अपनी औलाद से, हम उसको सब कुछ देते हैं, और वो जो हमसे हमारी माओ से बेइंतहा ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, उसने हमें 60, 70, 80 साल के लिए दुनिया में ऐसे ही भेज दिया. I mean, can you even imagine this? The fact is that every resource you need, and that's another presupposition, okay, कि हर वो रिसोर्स जो मुझे और आपको अपनी जिंदगी में कोई बेहतरी तब्दीली लाने के लिए चाहिए, वो आपके और मेरे अंदर मौजूद है. लेकिन हमने क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है, फर्स्ट करो कि बच्चे के किताब बैग में हमारे लंच बॉक्स रखा था, बट बच्चा जो है वो भागने दौड़ने में उसका लंच बॉक्स जो किताबों के नीचे हो गया. अब जब वो ब्रेक का टाइम आया, उसने देखा अम्मा ने आज लंच दिया ही नहीं है और भूखा रह गया. लंच बॉक्स बैग में था, बच्चे ने उसको तलाश नहीं किया. बिल्कुल उसी तरह हर वो रिसोर्स जो आपको अपनी जिंदगी में बेहतरी के लिए चाहिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए चाहिए, अपनी जिंदगी में कोई बेहतर तब्दीली लाने के लिए चाहिए, वो आपके अंदर मौजूद है. That's another presupposition of NLP. So there is no such thing as an unresourceful person. It's that sometimes we operate from an unresourceful state of mind and body. Okay, आप में मेरे अंदर resources की कोई कमी नहीं है. It's just कि कभी-कभी हम unresourceful states के अंदर operate कर रहे होते हैं. Okay, so these are some of the presuppositions. There are many. अगर मैं खाली presuppositions पे जाऊं, again ये सारे topics इतने बड़े-बड़े topics हैं कि मेरा ये पूरा 3 घंटे का सेशन सिर्फ इन presuppositions पे निकल जाए. कि मेरा जो होम स्टडी कोर्स है उसके अंदर खाली presuppositions वाला जो सेक्शन है वो मेरे ख्याल से 1.5-2 घंटे का होगा. So there are many. Inshallah ta'ala, at the end of this program, you will Ramzan will give you
some details and how you can access a bonus program, जिसमें you will find ये जो presuppositions जो मैं आपसे discuss कर रहा हूँ, सारी की सारी presuppositions आपको मिल जाएंगी. We have a bonus program for you, which is called the beliefs of success in NLP. So you'll find that you will learn these things in detail. इसलिए यहाँ पर इसको बहुत detail में नहीं जाऊँगा, but this is just to give you an idea. I hope this makes some sense to you. Now Aisha has a comment here, and the comment is sometimes due to social pressure, sometimes you don't have a choice. Now here's another thing. Alam has said that sometimes you don't have a choice. NLP की presuppositions में जो last presupposition आप पढ़ेंगे is this: NLP is all about adding more choices. It's all about adding more choices. Okay, and when it says sometimes due to social pressure, jo Aisha, think about this. There is no social pressure. It's your interpretation of events and people's behaviors that you take pressure from. It appears to us that there is something outside of us causing what we are feeling. It's always our own thinking.